जैसे मेरे फादर जो हैं वो थोड़े अजीब किस्म के लोग हैं। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करानी चाहे। पहले हमारी बच्ची बहुत डरती थी या फिर कोई भी बात नहीं कहने आती थी। जैसे स्वास्थ्य चैप्टर में हमने पढ़ा महामारी के बारे में, तो हमारी बच्चियाँ आती थी और कहती थी दीदी करके छुप जाती थी, फिर दीदी करके छुप जाती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी कि दीदी हमको पैड्स चाहिए। लेकिन अब वो नहीं है, सारा हेजिटेशन बच्चों में भी दूर हुआ है, हम में भी बदलाव आया है। मैं भी खुल के बोल पाती हूँ, बच्ची को भी समझा पाती हूँ। The Girls First program works from what we like to say, from the inside out. The program is focused on building the skills of resilience, which are really about helping a child to learn how to deal with adversity, to bounce back from adversity, and to gain skills to thrive. पहले मैं बहुत डरती थी, परीक्षा से भी बहुत डरती थी, पर अब नहीं डरती हूँ। और पहले मैं कोई भी काम में जल्दी गुस्सा जाती थी, पर अब नहीं गुस्साती हूँ जब से मैं गर्ल फर्स्ट से जुड़ी हूँ। So we have been in Bihar since 2013. We started with just a few schools. We started with 75 schools. Over time, we've been moving to more and more schools. From one district, we moved to 2 districts, and by next year, we're going to work in around 1100 schools. And I think that little bit of spark that I always see, those aha moments in the eyes of children, is something that makes me feel that this is an approach that's going to go really far. The single most important thing we can do is to make sure we've got a world-class education system for everybody. That is a prerequisite for prosperity. It is an obligation that we have for the next generation. Together with the Ministry of Education, Tharaka County, we were able to select 5 schools for the project. Mbiru Primary, Mariani Primary, ACK Kaanwa, PCK Kaanwa, and Manjati Primary, they were selected for the project activities. Given that the project was to develop some resilience in the learners, particularly class 8s, it was agreed that it was an important project that has to be supported. Introduction of Youth First Kenya was intended to improve academic performance of the beneficiaries, that is class 8 pupils, and to enhance transition to secondary schools. This project has already been implemented. I was able to visit it in the field, and one of the things that I found is that the students are benefiting a lot, the pupils in the field. YFK imenisaidia kwa listening skills kwa sababu mbeleni shosho yangu alikuwa ananiambia kitu alafu nakataa kusikia, lakini sasa akiniambia kitu na mwangalia na nasikiza venye ananiambia. Majina yangu naitwa Caroline Ngaki from Boelo Primary School, na soma darasa la 8. Tunaishi na nyanyangu na shosho yangu kwa sababu mamangu alituacha tukiwa watoto wadogo. When I look at the pupils, the learners, they have really changed. First of all, they have gained a lot of courage. Interaction with the teachers is very easy this time. And also, when I look at the issue of resilience, which is a component in the Youth First Kenya, they are able to come back to their normal situations after maybe the challenges at home. We have conducted 23 sessions, 14 sessions for resilience, and 9 sessions for health since January this year, through our teachers who have undergone intensive training in Youth First concepts. Among the things that this project has really achieved is to build the capacity of local partners to implement the project. It has been able to help us to build new partnerships. It has made it possible for us to upstream issues of mental health to young people and to prevent young people from getting emotional distresses in the first place. Manira Subiza Samuel happens to be a beneficiary
of the Youth First Rwanda program. Samuel is a senior 1 student at Ririma Catholic, a school that is based in Ririma sector, Bugesera district in Rwanda. Ndiga cyane niga mbishyizeho umuhate nkaba nakiga indimi kugira ngo nimba umunyamakuru nzajye mbasha kuvuga nyine neza indimi zose. Before Youth First Rwanda was introduced, Samuel says that it was not easy for him to sit with his colleagues and share ideas. But after interacting with Youth First Rwanda content, he is now able to socialize with his colleagues. He can sit with them and exchange ideas and learn from them. First ikintu yamariye ni uko mbere naburaga umwanya wo kuba nahura na bagenzi banjye ngo tumashe kungurana ibitekerezo, ariko ubu ngubu dusigaye duhura tukabasha kuba twakungurana ibitekerezo. From our side, as Youth First Rwanda staff, we wish Samuel all the best in his future endeavors. पहले हम नहीं जानते थे कि भावनाएं क्या होती है। पहले जानते थे कि हमारे मुंह पे हर दम मतलब भावनाएं बदलती रहती है। इतना मतलब बहुत अच्छा बनाया मुझे। मेरा नाम अंशु कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। हमारे मतलब पहले हम जानते थे कि लड़की लोग बड़ी होती है, पढ़ लिख कर बड़ी होती है, 8 पास करती है। फिर नहीं, हम तो आँख से देखे भी है कि मेरी दादी है ना, मेरी बुआ 10th पास की और उसका शादी हो गया। वो जाती करे वो करते घर में रहते, तो हम सोचे थे कि हमू ऐसी बड़का हो जाए तो हमरो ऐसी शादी हो जाए, हमू लड़का के बात मानम, हम सिर्फ घर ही में रह, मतलब घर से बाहर ना निकलम। जब हम कोरस्टोन हुआ तो कोरस्टोन से हमने सीखा कि नहीं, हम लोग भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं, हमारे भी कुछ लक्ष्य होते हैं। अगर पापा मना करेंगे कि नहीं तुमको पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारा शादी कर देंगे, तो हम अपने पापा से जाके बात करेंगे मैं संवाद के द्वारा कि पापा अभी हमरा शादी नहीं करे लबा, अभी हमरा पढ़े लबा, हमरा अभी पढ़े था, हम पढ़ लिख के अपन बैंक में नज़र बनना चाहती हैं। कोरस्टोन से मुझे बहुत सारे ज्ञान मिले। कोरस्टोन मतलब मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा मतलब सत्र है, इसलिए थैंक यू कोरस्टोन, क्योंकि कोरस्टोन से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। Sometimes when someone talks to me, I get angry, I get miserable, but after in Youth First Rwanda, I have know how to manage my my emotions, my difficult emotions, so that when someone talks to me, I know how to react, I know how to answer, how to respond. Another thing is that I was also, I didn't set a goal, I lived like, I don't have future, I will live for today only, but after in Youth First Rwanda now, I set a goal, I save some money for my future and for my family and other things. I also learned to manage my difficult emotions, and it was something that I needed the most, and something that is the best skill that I have learned from this program. I wish to help other kids from primary and for secondary school who need to know this, because there's a lot of youth in Rwanda who need to know how to fight with temptations we face in our age. So I want to help them, and I'm dreaming to become a better person in my future. मेरा गांव का समाज तो अच्छा है, लेकिन एक परेशानी यही है कि इस गांव में बाल बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, नहीं लड़का को नहीं लड़के को,
सब लोग कुछ लोग हैं कि जो अपना बाल बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं तो पढ़ाने की मतलब कि नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको मजबूरी हो जाता है, इधर पे चले जाते हैं तो नहीं पढ़ा पाते हैं। हम कस्तूरबा के बारे में जब जाने थे तो अपने मम्मी से पापा से जिद किए कि हम भी पढ़ेंगे और आगे कुछ हम भी करेंगे। और वहाँ जाकर जब हम 8th क्लास से पास होने वाले थे तो 8th क्लास में कार्यक्रम गर्ल्स फर्स्ट का चला था। इससे हमको चारित्रिक गुण से बहुत मदद मिला। इसमें चारित्रिक गुण सीखने की चाह, जिज्ञासा, दृढ़ता, ईमानदारी, जोश और बुद्धिमत्ता, ऐसे बहुत सारे चारित्रिक गुण हैं जो हमें बहुत मदद किया है। क्योंकि जब वहाँ से आए थे तो लॉकडाउन लग गया था, तो इससे पढ़ने में सभी को दिक्कत हुआ, तो हम इससे सीखने की चाह को यूज किए उसमें कि हम उससे नए नए प्रकार की नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश किए और इसमें लक्ष्य प्राप्त करने की सीखे। तो मेरा लक्ष्य जो था वो है जिला पदाधिकारी बनने का। लक्ष्य के बारे में हम वहाँ कस्तूरबा में तो सीख के आए लक्ष्य के बारे में, लेकिन जब घर आए तो हमारे घर में पता चला कि हमारे घर के परिवार हमारा शादी ठीक कर दें। तो मेरे सामने तो मेरा लक्ष्य था, लेकिन इधर हमारा कठिन जो समय था वो हमारा शादी था। लेकिन हम उसके बारे में मम्मी पापा को बोले भी कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम अभी पढ़ाई करेंगे, तो मम्मी पापा नहीं माने। फिर हम मैडम से बात किए, कंचन मैडम से, तो हमारे मम्मी पापा को बोले कि अभी आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, इनको और आगे भी पढ़ाइए। और हम मैडम को बोले कि मैडम अगर +2 तक कस्तूरबा है तो पता लगाइए, हम उसमें जाएंगे। तो मैडम हमको बताई कि यहाँ ना वहाँ पटना में जो कस्तूरबा है वो +2 तक है, तो हम बोले कि हम जाएंगे वहाँ। हाँ, और एक समस्या आई थी कि ट्यूशन वगैरह घर से नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे माता पिता के पास उतना पैसा नहीं थे कि हम ट्यूशन कर पाते। तो हम घर में कुछ सिलाई भी किए और बच्चों को कुछ पढ़ाए भी, तो उससे बच्चों को पढ़ाए तो उससे और भी मेरा जो पढ़ाई है वो थोड़ा मजबूत होते गया। और जो सिलाई किए उससे जो कुछ पैसा हुआ उससे भी हम ट्यूशन किए और उससे हम पढ़ाई किए, और उससे मतलब कि 10 का एग्जाम जो था वो भी बहुत कठिन समस्या था, उससे भी हम पार किए। और इससे आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो हम आगे जाएंगे कस्तूरबा, और ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में हम जिला पदाधिकारी बनेंगे। जब लड़की नाटक करती है साथ में तो पहले हम सोचते थे कि लड़कियों के साथ बात नहीं करना चाहिए। जब हम सोचे कि घर में भी तो मम्मी और बहन के साथ बात करते हैं, उसी तरह से भी लड़कियों के साथ बात करते हैं। और हम भी तो यही सोचते थे, मगर हम सोचते थे कि अब लड़का लड़की के संग क्या बात करें कि पहले हम इस लड़की से बात नहीं करना चाहते थे, उससे दूर रहना चाहते थे, और अब तो हम उससे बात भी करते हैं अपना दोस्त की तरह। अपने जैसे हम तुमसे बात करते हैं वैसे ही हम उनसे भी बात करते हैं। पता चला कि लड़का लड़के से बात करना कोई गुनाह नहीं है। पहले हम बात इसलिए नहीं करते थे कि समाज में सब सोचता था कि वो लड़की से बात कर रहा है, अच्छा नहीं है, सब खाली इधर उधर माकल चलता है, लड़की से बात करते रहता है, यही सब हम सोचे। और सेशन के तो उसमें हम खुली सोचे के बारे में जाने, तो उसमें सोचे कि अब जो भी बात करना रहता है उसको खुलकर बात करें, किसी भी रुकावट के नहीं। और जितना बात हमको जाति का सवाल करना है उतना ही पर उससे पूछे और बात करें, उससे ज़्यादा फालतू बात नहीं करें। लड़कियां भी पढ़कर बहुत आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरह से कल्पना चावला स्पेस पे गई थी, उसी तरह से लड़कियां भी स्पेस पर जाना चाहती है। वो भी पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, और भी डॉक्टर बनकर अपने गांव में भी और पूरे शहर को भी स्वास्थ्य बना सकती है। हमारे नज़र में महिलाओं को शिक्षा पूरा करने के लिए इसलिए हमको ज़रूरी लगता है कि जब वह पढ़ी लिखी रहेगी तो तभी वह आगे बढ़ेगी, और जब उनका शादी हो जाएगा तो उनका बाल बच्चा होगा, उसको अच्छे तरह से वह जानेंगे, तभी ना वह बताएंगे और सिखाएंगे कि हाँ बेटा देखो हम पढ़ लिख कर ये काम करना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे अधूरे सपना को तुम पूरा करो। और वह अपने
बाल बच्चा को यही सब सिखाएंगे। We're working in the city of Surat. About 1,000 slums just in this city alone. Close to half the population lives in slums. And in those slums are young girls and young women with a tremendous amount of vitality and a desire really to change their lives. But what's happened is they've been told that they have no assets or skills whatsoever. How many years do the girls typically go to school? Girls start school going by 5 to 6 years. 5 or 6 years? Yeah, but I think they drop out more than 80% of the girls drop out before I think they complete standard 4. So they start at 6 and they drop out at about 10 years. And stay home and help in family or go for the child level. It's a curse to born in India as a Dalit woman, as a illiterate woman, and as a poor woman. So I feel that I think the life is something you can say life without life. Our mission at Corestone is to provide skills and training to adolescent girls and young women in highly vulnerable communities to help empower them to lift themselves out of poverty. Provide training and resources to young women. Typically what happens is they get educated and they invest that money back into the health of their own selves as well as their families. So we focus very specifically to begin with on young women and adolescent girls. This program is increasing the confidence in many young girls. Now many girls here are approaching me and saying, I want to be like you, and more than you. You're educated, but still you live the same. So I want to become like you, but do even more. Oh, I'm very excited to hear that, because if we can help you to be a role model for other girls, then maybe for the first time they will realize they have the potential to change their lives. As we phase out the pilot, we are confident that the pupils in Kenya are in dire need of life skills program, particularly that one which is going to help them develop resilience. Many young people lose it when they go through some traumatic experience, and from there they are not able to cope up from there. It may be death, it may be sickness, it may be lack of fees, but based on experience that we saw in this project, pupils are able to come back and then they are able to pick up from there and become useful members of society. Nimeona mabadiliko kulingana na masomo ambayo hao watoto walikuwa wanasoma, na nashukuru sana kwa walimu wao kwa kazi
walikuwa wakifanyia watoto wetu. Kwangu ukikuja utaona hapo karibu na choo kuna tap ya kuoga mikono baada ya kutoka kwenye choo. Na hiyo ni kazi nzuri sana kwa watoto, hata wanaonekana wakiwa wanafanya kazi nyumbani. Ukiwatuma wanaenda, na hivyo ndivyo mzazi anataka. As a school, we feel it was an honor to give us this pilot project, and we are delighted to see our children now even improving in terms of performance, even in self-esteem. You can see now the child even can communicate, even knowing what they are doing. So that is, we are happy, and indeed we are very happy. I would therefore passionately join the voices of other educationists and other stakeholders to lobby for a project like Youth First Kenya in all the schools in our country, so that we can enable our pupils to thrive and to achieve their goals in amidst the challenges that they are going through, which are inevitable, especially in our Kenyan environment, especially in the rural schools. You are lucky, you are blessed. We will win an advantage of your child. Wewe musheni wankwera. We will win a kanya kakutuma mwana waku akatwika nomolo omureketwe. Na Youth First Kenya. Akadoma maundu mengi muno mara you have been observing. Guteria baka ko umushie. Mwana you require to support him or her throughout. चैन देने वाले अमन देने वाले, चैन देने वाले अमन देने वाले, स्वागत है तेरा, स्वागत है तेरा, स्वागत है तेरा, स्वागत है तेरे नजर में सब है बराबर, तेरे नजर में सब है बराबर, तूने किया ना किसी का। It's 5:37 a.m. in Patna, the capital of Bihar, one of India's poorest and larger states. With a population of 100 million people, lack of access to education and healthcare has affected the most vulnerable for generations, creating a cycle of poverty, particularly for young girls. Cornerstone's Girls First program works to break this cycle. Girls First focuses on building resilience, the skills, strengths, and supports girls need to face challenges, to advocate for the rights, to say no to early marriage, and yes to staying in school. Investing in the resilience of at-risk girls creates a ripple effect. A resilient girl is more likely to complete her education, to be healthy, find work, and reinvest her income in her family. Three hours away from Patna, a special government boarding school provides a safe home for at-risk girls from low-caste and impoverished families. This is where we first met Meena, a quiet teenage girl who, with the help of Girls First, has been able to stand up to early marriage not once but several times. 15 से जो ये कोरस्टोन चल रहा है मेरे स्कूल में, इससे हमारी जो बालिकाएं हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेबल होके इसमें रुचि लेके इसमें अपना योगदान देती हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करके इसको, जैसे सेशन में देखते हैं कि जो हमारी मैम लोग पूछती हैं एकदम बेधड़क जवाब देती है। मीना जो वो शादी के बारे में इनकार कर गई और उससे लगभग सारी लड़कियों को इससे इम्प्रेस होना पड़ा, जो कि इस चीज़ को नहीं जानती थी कि शादी करना इस उम्र में गलत है। वो सारी लड़की इससे इम्प्रेस हुई और हमारे छात्रावास में जो है 1 महीने तक इसी बात की चर्चा हुई कि मीना पढ़ना चाहती है। आए थे मतलब शादी करने के लिए मम्मी और पापा भी, तो मतलब हम रोने लगे और बोले कि हम नहीं शादी करेंगे। तब पर मम्मी बोले कि चलो, और मैंने बोले क्या
से नहीं जाएगी, नहीं अब शादी नहीं करेगी, पढ़ाई करता, पढ़ लिख कर हम पुलिस बनेंगे तब करेंगे। ये कोस्टोन का जो गर्ल्स फर्स्ट प्रोग्राम है, ये इमोशनल रेजिलियंस का प्रोग्राम है। और हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं और खड़े होकर सब गोटा अपने अपने एक दूसरे के नाम बताते हैं और फिर बैठते हैं, फिर सेशन चालू होता है। कोई चीज़ करने का मन नहीं हो तो वीरता वाला बात लाते हैं तो वो कर लेते हैं। दयालुता किसी को मतलब नहीं देने का मन रहे तो पर मतलब कोई चीज़ रहे नहीं देने का मन, और आशा किसी चीज़ का मतलब आशा रखेंगे कि वो चीज़ होएगा मेरे साथ, क्योंकि सब चीज़ सीखने चरित्र गुण ये सब चीज़ सीखने के बाद गया। Mina also discovered karate and began to teach it to other girls. Along with her newfound courage, she's learned to set goals, make positive choices, and advocate for her rights. She is the first one within her family to break the norm. जनता से हमारे लिए तो बनी है। अब भी हम कराटे सीखने चाहते हैं, मीना सिखाएगा तो सीख ले। नाम से हम लोग से कमेवा पढ़त रह तो इस समय में पूरा करती रहे। Working in partnership with the Bihar Ministry of Education, Cornerstone trains school teachers to lead the Girls First program. This school is one of hundreds where Cornerstone's programs are in place. We're finding their voice, their resilience, and the power to thrive.